Hello everyone, this is Team Homeopathy MCQs. Today we are going to discuss on the introductory lectures on organ of medicine. So here we will discuss about the introduction of organ and the different editions of the organ. So let's start the different editions of organ. So before learning the different editions of organ, we all must know what is the organ. So the definition of organ. Organ originated from Latin word organum, which means the instrument, or is a Greek word by its origin and literally means the implement or musical instrument, organ of the body or a tool. In the New English Lexis, it has the meaning of an instrument for acquiring knowledge, specifically a body of principles of scientific or philosophical investigation. In this sense, we can simplify the semantics of organon to first, a method of scientific investigation, second, an instrument of thoughts, third, a system of logic, and fourth, the literary work. It also means an organ or system. Sixth, a group of logical requirements for scientific inquiry or demonstration. Seventh point, any major work of an author which sets down many fundamental principles in that specific topic. Now we come to the organ of medicine. It is presumed that Dr. Hahnemann was influenced with the word organum because its meaning had some practical relationship with his discovery of homeopathic medical science. The organon is the base of classical homeopathy. He wrote his book in the style of aphorisms which were originally Hippocratic. तो ये हिप्पोक्रेट्स की जो एफोरिज्म्स थी उसी स्टाइल में डॉक्टर हैनीमैन ने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन लिखी है. The word organon was used for the first time by the eminent Greek philosopher Aristotle in 384 to 312 BC. Under the common title of the organon, the work of Aristotle was summed up in the Logic Treatise. So before Hahnemann, who used the words, this is a very important point for the exam point of view. Who used the word organon before Hahnemann? So Aristotle used the word organon, and second, the Francis Bacon in 1561 to 1626 AD wrote a book on a logical subject titled Novum Organum, means the new organon, probably referring to Aristotle's organon. The book was in Latin language. Now we will come to the next point, the precursors of organon. So first book, an essay on new principles for ascertaining the curative power of drugs, published in 1796. Second book is the Fragmenta de Viribus Medicamentorium Positivus. It was published by Hahnemann in 1805. And the third book is the Medicine of Experience. It was published also in 1805. So these are the three books which known as the precursors of organon. So this is also an important point for the exam point of view. What are the precursors of organon?
So these three books are the known as the precursors of organ. Now we will come to the important works of Hahnemann preceding the organ. हैनीमैन ने ऑर्गन लिखने के पहले क्या क्या काम किए हैं इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। In 1796 he wrote an essay on a new principles of ascertaining the curative powers of drug and some examination of the previous principles. Second, in 1797 he wrote are the obstacles to the attainment of simplicity and certainty in practical medicine insurmountable. In 1805 he wrote Aesculapius in the Balance. In 1805 he wrote the Fragmenta de Viribus Medicamentorium Positivus. In 1805 he wrote the Medicine of Experience. In 1807 he wrote Indication of the homeopathic employment of medicine in ordinary practice. Now the organon is divided into the two broad sections. First is the theoretical part and second is the practical part. Basic principles containing definitions of fundamental ideas, the law of similars. Second, the demonstration that the homeopathic method is the only one to achieve cure. Third, the study plan, study of the disease, study of the remedies, and application of the remedies to the disease. Next, also included are sections on how to conduct the treatment and in the field of medicines. Now we come to the how many editions of organon? So we will discuss here. So in introduction, there are a total 5 editions which were published during the Hahnemann's time. The 6th edition was published after his death. We will be discussing all 6 editions of Organ of Medicine in this article. The 5th edition was published in 1833 and the 6th edition was published in 1921, 78 years after the death of Hahnemann in 1843. The manuscript of 6th edition was made ready by Dr. Hahnemann before his death. The first edition was published in 1810 with the title Organon of Rational Art of Healing. The title was changed to Organon of Healing Art. अब हम बात करेंगे importance of organ. So what is the importance of organ? The organ of medicine helps the physician to acquire the knowledge of the homeopathic system of medicine to treat the patient holistically and rationally. It is written by Dr. J.T. Kent in his lectures. Homeopathy is applicable to the every curable cases, but the great thing is to know how to apply this. Now the definition. Organ of Medicine is a book written by our master Dr. Samuel Hahnemann containing the principles of homeopathy. What is the aim and objects of Organ of Medicine? The aim and object of Hahnemann for writing Organ of Medicine was to formulate doctrines, laws, and practical instruction to the medical profession so that they can practice homeopathy in a logical and elaborate way. Now we will come to the editions of Organ of Medicine. So during his lifetime, Hahnemann published 5 editions of Organ. The 5th one is the most popular. The 6th edition was published long after his death in 1921. The first edition was published in 1810. The title was Organ
of the rational medical science. Publication in 1810 in Torgu. ये तोरगु में पब्लिश हुआ था. It was published by Arnold and financed by a grateful patient. It contains 271 aphorisms. Title page contains a stanza of a poem from Gellert, the famous German poet. Translation by Dr. C. E. Wheeler. Translated this edition into English in 1913. Now we come to the second edition. Second edition was published in 1819. The title was Organon of the Healing Art. Publication, it was published as an augmented edition. ये एक augmented edition के रूप में publish हुआ. It was published from Leipzig. It contains 318 paragraphs or the aphorisms, but the numeration was wrong. Hence, the actual number of section is 315. इसमें 318 पैराग्राफ्स या एफोरिज्म दी गई हैं, लेकिन इनकी जो नंबर है वो काउंटिंग इनकी गलत है. इसकी वजह से इसमें जो टोटल एक्चुअल नंबर है वो है 315. The stanza of Gellert poem was replaced by two words ade sapere, which remained in all succeeding editions. Translation. It was the first ever translated edition of Organon from German to French. So second edition is the first edition which was published, which was first ever translated edition of Organon of Medicine from German to French. It was translated by Ernest George von Bernau in 1824. Now the third edition. It was published in 1824. The title, the name and title of page remained unchanged. Publication, it was published as an improved edition and published from Cothen. It contains 320 paragraphs, but the wrong numeration were reflected hence, so the actual numbers were 317 sections. थर्ड एडिशन 1824 में पब्लिश हुआ. इसका जो टाइटल है वो चेंज नहीं किया गया, सेकेंड एडिशन की ही तरह इसमें टाइटल रखा गया. इसका जो पब्लिकेशन है वो इम्प्रूव्ड एडिशन कहलाता है. सेकेंड एडिशन एगुमेंटेड एडिशन, थर्ड एडिशन इम्प्रूव्ड एडिशन कहलाता है. फर्स्ट एडिशन लिप्सिक से पब्लिश हुआ था और थर्ड एडिशन कोथेन से पब्लिश हुआ है. थर्ड एडिशन में 318 एफोरिज्म थी जो कि एक्चुअली में 315 थी. थर्ड एडिशन में 320 एफोरिज्म्स थी जो कि एक्चुअल में 317 एफोरिज्म्स थी. ये आपको याद रखना. अब हम बात करेंगे फोर्थ एडिशन ऑफ ऑर्गनन. फोर्थ एडिशन ऑफ ऑर्गनन was published in 1829. The title, the name and the title page remained the same as before. Publication, it was published as an augmented and improved edition. It was published in 1829 from Cothen. फोर्थ एडिशन भी कोथेन से पब्लिश हुआ था और फोर्थ एडिशन को augmented and improved edition भी कहते हैं. It contains many paragraphs are changed and omitted. It contains 292 sections. Theory of chronic diseases and the introduction of Organon was introduced for the first time in this edition. The translation by Charles H. Derwent in English in 1833, being the first ever English translation of Organon. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फोर्थ एडिशन के. अब हम बात करेंगे फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गनन. फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गनन वाज पब्लिश्ड in the year 1833. The title was same as before.
इसका भी टाइटल चेंज नहीं किया गया। Publication: This was the last edition which was published during the lifetime of Hahnemann in the year 1833 from Cotham. It contains 294 sections or the aphorisms. The doctrine of vital force and drug dynamization were introduced for the first time in this edition. This edition is the most perfect of all editions. ये सबसे perfect edition है and recognized as the textbook in homeopathic institution all over the world. इसका जो translation है in English by Robert Elias Durgan in 1849, again in 1893. Also translated in English by Dr. C. Wesselholt द्वारा किया गया। अब हम बात करेंगे 6th edition of Organon. 6th edition was published in the year 1921. Title same as before. Publication: It was completed in 1842 in Paris, but unfortunately it wasn't published by him as he breathed his last on 2nd July 1843. It was the first published in German language by Richard Hale in 1921. 78 years after the death of Hahnemann, the English translation was done by William Borek. It contained 291 sections. इसमें 291 sections या aphorisms दी गई हैं. Theory of repetition of doses and concepts of dynamic influences and the 50 millisimolar potencies is introduced in this edition. 6th edition of Organon में theory of repetitions of doses, concept of dynamic influence and 50 millisimal potencies introduced in this edition. तो ये 3 एडिशंस इसमें हुए थे, रिपीटिशन ऑफ डोजेस और जो वाइटल फोर्स की जगह डायनामिक इन्फ्लुएंस किया गया था और 50 मिल्स और इसमें जो पोटेंसी है वो 50 मिल्सिमल पोटेंसी इस एडिशन में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था ऑल द 6 एडिशंस ऑफ द ऑर्गन के बारे में। अब हम बात करेंगे एक की नोट स्टडी ऑन डिफरेंट एडिशंस ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। Introduction: The most important 3 essential elements of homeopathic system of medicines are the principle, the remedy, and the dose, and the 3 are the equal importance in the process of healing via homeopathic remedies. 3 important essential elements in homeopathic system of medicines कौन से हैं? Are the principles, the remedy, and the doses. Precursors of the organ of medicines are Medicine of Experience, published in 1805, Essay on a New Principles of Ascertaining the Curative Powers of Drugs, with a few glances at those hitherto employed, which was published in Hueflein's Journal of Practical Medicine in volume 21, part 3 and page 5 to 90 in 1796. Foundation stones of homeopathic system of medicine were laid in this essay. अब हम फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। टाइटल: ऑर्गन ऑफ रेशनल आर्ट ऑफ हीलिंग। इसका जो नाम था वो ऑर्गन ऑफ रेशनल आर्ट ऑफ हीलिंग है। इसका प्रेफेस to first edition, 4 pages from volume 4 pages from page 1 to 4, 6 paragraphs, a total of 48 lines. उसका जो फर्स्ट पेज था उसमें 1810 और डिस्डन लिखा हुआ था। अब इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये थोड़ी डिटेल में है, टाइम कंज्यूमिंग है, डिटेल में है लिखा। इंट्रोडक्शन:
43 pages, that is the 64 paragraphs, one footnote, two paragraph 57 paragraphs were not numbered and continuous writing. 43 pages, that is the 64 paragraphs, one footnote, two paragraph 57 paragraphs were not numbered and was continuous writing. Contain examples of unintentional cures on the basis of homeopathic principles by prominent physicians. This writing had appeared as an article in Hughland Journal titled Introduction of the Homeopathic Employment of Medicines in Ordinary Practice. Aphorism इसमें पेजेस है 1 to 222 पेजेस है. Aphorisms are numbered 271 aphorisms and 76 footnotes. तो फर्स्ट एडिशन में 271 aphorisms हैं और 76 footnotes. Footnotes were denoted as A and M, appeared at the end of the aphorism and were not numbered. इनके कोई नंबर नहीं थी. इसकी जो नॉवेल्टीज है वो 42 पेजेस ऑफ एग्जांपल्स ऑफ unintentional application of drugs on homeopathic principles by contemporary allopathic physicians. The antipathy axiom contra contrarius was completed as contraria contrarius curanter in para 1 of the introduction, and the homeopathic axiom was completed as similibus curanter in para 2 of the introduction of the edition. तो फर्स्ट एडिशन का जो इंट्रोडक्शन है उसमें एंटीपैथी और होम्योपैथी दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है. अब कंपैरिजन. फर्स्ट एडिशन हैड retained some portion of medicine of experience, which was an easy type with no paragraphs, while Organon had numbered aphorisms. Number 1 to para 29 are important even today, which consist of Hahnemann's provision about the hazards of pollution, adulteration, fast food and occupation, etc. इसका जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन वर डन बाय डॉक्टर C.E. Wheeler in 1917 and were published from London. अब इसमें एरर्स के बारे में बात करेंगे. एरर्स. डॉक्टर C.E. Wheeler did not translate the introduction of the Organon. He translated only a few footnotes of the aphorisms. To a large number of aphorisms, he added his own translator's note. Did not translated aphorisms 158 and printed Hahnemann's aphorism as 159, as 158, 160 as 159 and omitted aphorism 160 completely. तो डॉक्टर C.E. Wheeler ने ट्रांसलेशन के समय क्या क्या गलतियां की थी. उन्होंने कुछ एफोरिज्म्स के फुटनोट को ही ट्रांसलेशन किया था और उन्होंने डॉक्टर हैनीमैन और जो बाकी एफोरिज्म्स थी उन्होंने अपने खुद के ट्रांसलेटर्स नोट डाल दिए थे. उन्होंने एफोरिज्म 159 को ट्रांसलेट नहीं किया था और उसका जो डॉक्टर हैनीमैन ने जो प्रिंट किया था 159 उसको उन्होंने हटा दिया था. 158 से डायरेक्ट 160 में पहुंच गए थे. अब सेकेंड एडिशन ऑफ ऑर्गेनन, इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी पढ़ेंगे. इसका जो टाइटल है वो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन ऑफ हीलिंग आर्ट. इसका प्रेफेस है कंसिस्ट ऑफ 18 पैराग्राफ्स एंड टोटल ऑफ 203 लाइन्स. इंट्रोडक्शन 62 pages, consist of 70 paragraphs and 268 footnotes.
It was divided into 3 chapters. End of the chapters were indicated by a closing line. इसमें एक डॉट लगा दिया था उन्होंने क्लोजिंग लाइन करने के लिए. 3 chapters में डिवाइडेड था. Aphorisms, 315 aphorisms and 130 footnotes. इसमें 315 aphorisms और 130 footnotes थी. Hahnemann made a mistake in numbering the aphorisms. डॉक्टर हैनीमैन जो है उनको नंबरिंग में गलती कर गए थे. फुटनोट वर मार्क्ड विथ स्टार और प्लस साइन एंड वर नॉट नंबर्ड. डॉक्टर हैनीमैन ने उनको स्टार और प्लस साइन में डोनेट किया था, लेकिन उनका नंबर नहीं डाले थे. देयर वर नो एफरिज्म नंबरिंग 216, 217 एंड 218. ये 3 एफरिज्म उसमें मिस थी. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि which 3 aphorisms were missed in second edition of Organon. तो ये है आपके 216, 217 and 218. After aphorism 215, the next number was aphorism 219. तो 215 के बाद 219 डायरेक्टली आ गया था. Although the number given to the last aphorism was 318, there were only 315 aphorisms of Organon. तो फाइनली उसमें 315 aphorism ही थी. अब इसकी नोवेल्टीज क्या है? The title of the book has changed. Gellert poem was removed and Ado Sapere was written. The introduction has 62 pages and 149 new aphorisms were added. In contrast to the first edition, where it was written below to the related aphorism, summary of aphorisms were introduced in this edition. A list of books of 3 pages of the publisher was printed in the end of the book. ठीक, इसका translations was never translated to English, was translated in French by Dr. E.G. Bernau in 1824. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कभी नहीं हुआ है, लेकिन फ्रेंच ट्रांसलेशन इसका बर्नाउ के द्वारा 1824 में किया गया. अब इसमें एरर्स क्या है? एरर्स: Hahnemann's numbering of aphorism were wrong. He gave 318 numbers to the last aphorism, but the actual number of aphorisms is 315, as there were no aphorisms numbering 216, 217 and 218. तो ये इसकी एरर थी जो आपको याद रखना है. अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है. अब थर्ड एडिशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. थर्ड एडिशन टाइटल: The title of the book remained the same, that is the Organon of Medicine or the Healing Art. इसका preface to first edition, page 3 and 4. Preface to second edition, page 5. Preface to third edition, page 11 and 4. Preface to third edition had 3 paragraphs and a footnote of 5 lines in a total of 32 lines. At the end was mentioned Cothen, Easter 1824. अब इसका introduction consists of 52 pages, 70 paragraphs and 266 footnotes, and were denoted by numbers. Introduction was divided into 3 chapters. Now the aphorisms were contained in 229 pages, page 53 to page 281.
There were total of 319 aphorisms, and the numbering given to the last aphorism was 320. Novelties क्या है इसकी? Was published within 5 years of publication of the second edition. सेकेंड एडिशन के 5 साल बाद ही पब्लिश हुआ था. Aphorism 319 and 320 deals with mesmerism were added. mesmerism is related to aphorism से वो इसमें ऐड कर दी गई थी थर्ड एडिशन में. Two new aphorisms were added. Aphorism 108 and of the second edition become 108A and 108B. Aphorism 167 become 167A and 167B. Translation. It was translated in French by E. G. Vernau in 1832. The same year, another translation was done in French by A. J. L. Jordan. अब इसमें एरर क्या है? Errors. The errors of second edition were repeated in third edition. सेकेंड एडिशन की जो एरर है वो थर्ड एडिशन में भी रिपीट कर दी गई थी. The last number given was 320. The last number given was 320. The actual number in third edition is 317. तो 317 aphorisms थी लेकिन 320 लिखी गई. But as there are other aphorisms 108B and the 167B. So the total number of aphorisms is 390. एक ही aphorism को A और B पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था. इस तरह से वो एक ही वो ज्यादा बढ़ गई थी लेकिन एक्चुअल नंबर है वो है 390. अब हम फोर्थ एडिशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. टाइटल द रिमेन द सेम. द Ade Sapere on the cover page remained. Preface had 4 paragraphs in 4 pages, consist of a total of 76 lines. Introduction 104 pages, page number 1 to 104, 138 paragraphs and 303 footnotes. Was divided into 2 parts. Part 1 consists of 66 paragraphs and 25 footnotes. Was divided into 8 chapters. Part 2 consists of examples of homeopathic cure performed unintentionally by physicians of the old school of medicine. It had 72 paragraphs and 278 footnotes. और इसमें aphorism total number of 292 aphorisms in number with 135 footnotes were numbered separately on each page from 1 onwards. इसकी novelties क्या है? The theory of chronic miasm was introduced or introduction was enlarged and divided into 2 parts. Part 1 the fundamental defects of the allopathic system. Second part contain examples of homeopathic cures performed by renowned allopathic physicians. इसका translation first English translation was done by Charles H. Devrient of London in 1833. It was reprinted by C. Herring's North American Academy of Homeopathic Healing Art in 1836. अब इसमें एरर क्या थे? फोर्थ एडिशन में जो एरर्स थे, the theory of chronic miasm was introduced in this edition, aphorism 70 to aphorism 75. But no reference was made in preface to fourth edition. इसमें थ्योरी ऑफ क्रोनिक मियाज्म
इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन इसका कोई रेफरेंस नहीं दिया गया था। अब हम बात करेंगे फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन के बारे में डिटेल में। सो द टाइटल रिमेन द सेम, टाइटल कोई चेंज नहीं हुआ। प्रेफेस 8 पेजेस कंटेनिंग 7 paragraphs and 3 footnotes. It was dated Cothen 28 March 1833 and below Samuel Hahnemann was printed. फिफ्थ एडिशन का जो प्रेफेस था वो 8 पेज का था और 7 पैराग्राफ्स थे, 3 फुटनोट्स उसमें जो है दिए गए थे। इसमें डेट डली थी 28 मार्च 1833। उसके नीचे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की फोटो प्रिंटेड थी। तो ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन was in 76 pages, 76 containing 99 paragraphs and 47 footnotes. It was divided into 12 chapters. Aphorisms. It contains in 228 pages, paragraph 77 to 304. Aphorisms were serially numbered and footnotes were separately numbered 1, 2, 3, etc. for each page. So the total 294 aphorisms and 159 footnotes. तो फिफ्थ एडिशन में जो सारी एफ्रोजम्स थी वो भी सही कर दी गई और इनके जो फुट नोट्स थे उनको भी नंबर दिया गया। नोवेल्टीज क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटल फोर्स वाज इंट्रोड्यूस। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटल फोर्स इंट्रोड्यूस किया गया था। ए डेफिनाइट ड्रग व्हीकल रेशियो वाज फिक्स्ड एंड द मेथड ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस। द इंट्रोडक्शन of 12 chapters were kept and the rest of the portion of the fourth edition was dropped. इसमें क्या नॉवेल्टीज थी? इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटल फोर्स इंट्रोड्यूस की गई थी और व्हीकल के बारे में दिया गया था और ड्रग डायनामाइजेशन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि फिफ्थ एडिशन में क्या क्या दिया गया था। The evidence in earlier practice, logic and the method of the whole homeopathic system was distinctly outlined. Translations. English translations were done by 1939 Hearings North American Academy of Homeopathic Healing Art. In 1849, Dr. R. E. Durgan. In 1876, C. Holsoft. In 1889, B. Frank. इन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया था। अब इसमें इस एडिशन में एरर्स क्या थी? एरर्स, हैनीमैन मेंशन्ड काइसर यानी एम्परर एलेक्सिस एज ब्रदर ऑफ प्रिंसेस मारिया प्रोफाइंजियोंटा। इंस्टीड एलेक्सियस वाज हर फादर। तो डॉक्टर हैनीमैन ने इसमें जो एम्परर थी कैसियर उनके जो फादर का नाम था उसमें ब्रदर कर दिया था। There are some errors in Hearings publications based on Devrient translation and because of protests, its manuscript were destroyed. जो फिफ्थ एडिशन है इसका जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी क्योंकि हैनीमैन का काफी ज्यादा और होम्योपैथी का काफी ज्यादा विरोध हो रहा था। सी वेसलहॉफ changed the frame of Hahnemann's sentences and replaced some aphorisms from their places and put them under appendix. He repeated some errors of Durgan and made some fresh errors in editing and translating. Durgan's translation with the
suggestions of Richard Hughes was the best and become the textbook in homeopathic institution. तो इसमें जो डुटगन का ट्रांसलेशन है वो रिचर्ड ह्यूजेस ने उसमें सजेशन दिया और ये बेस्ट ट्रांसलेशन हुआ था और इसको टेक्स्ट बुक के रूप में होम्योपैथिक सभी सभी होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है. बट ही मेड सम एरर्स इन फैक्ट्स इन ट्रांसलेटिंग एंड एडिट. लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रह गई हैं. तो लेकिन आपको ये याद रखना है कि फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गनम है वो सबसे ज्यादा परफेक्ट है, सभी एडिशंस में सबसे ज्यादा परफेक्ट है और इसीलिए ये सभी कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है. अब हम सिक्स एडिशन के बारे में डिटेल में थोड़ी सा पढ़ेंगे. सिक्स एडिशन ऑफ ऑर्गनम. टाइटल द सैमुअल हैनीमैन इन स्मॉल लेटर्स एंड रिचर्ड हेल एमडी इन बिगर लेटर्स and below it the name of the publisher. The word Aldo Sapere were wrongly removed from the cover page and put on top of the publisher's content. इसका जो टाइटल था वो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन कर दिया गया. वैसे सेम ही था वो, लेकिन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन कर दिया गया. डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने इसको स्मॉल लेटर्स में लिखा था, लेकिन रिचर्ड हेल ने इसको बिगर लेटर में लिखा है. वर्ड ऑडियो सपेरे इसको जो है वो कवर पेज से हटा के पब्लिशर्स कंटेंट के टॉप पे रख दिया गया है. प्रीफेस 4 पैराग्राफ्स एंड डेट इज एंड ऑफ February 1842. Introduction 30 pages, page number 11 to page number 41. Introduction was divided into 12 chapters separated from each others by a closing line. उसमें डॉट का निशान है, closing line, just as in the fifth edition. जैसा कि फिफ्थ एडिशन में किया गया था. Chapters are the same as in fifth edition. Chapters फिफ्थ एडिशन के जैसे ही थे इसमें. Aphorism were contained in 114 pages from page 42 to page 155. 291 aphorisms in Hell's book footnote were 224. Were serially numbered and in violation of two Hanneman's style were printed at the end of the book. Page number 156 to 220. The editor's note were serialized with that the Hanneman. It is not easy to differentiate between footnotes and Hanneman and Hell. So the publishers gave disfigured and destroyed Hanneman's book. जो सिक्स्थ एडिशन था उसमें पब्लिशर्स ने उसको डिसफिगर कर दिया था और जो डॉक्टर हैनीमैन की ओरिजिनल जो बुक उन्होंने लिखी थी, जो प्रिपेयर की थी, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया. अब इसकी नॉवेल्टीज क्या है? A new scale of preparation of drugs, that is the 50 millisiemel scale, was introduced in this edition. सिक्स एडिशन में जो 50 मिलीसिमल स्केल है वो दी गई थी और वाइटल फोर्स की जगह इसमें वाइटल प्रिंसिपल कर दिया गया था. रूल्स ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोजेस वर चेंज. इसमें जो रिपीटेशन ऑफ डोजेस के रूल थे वो चेंज कर दिए गए थे. इस सिक्स एडिशन के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ की गई थी और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कंट्रोवर्सी की, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन कभी वो नहीं बोलते थे और वो इसमें लिखी है, इसलिए ये दिस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एडिशन ऑफ ऑर्गनम. Translation was translated in English by Dr. William Borick of USA. Stephen Decker made another English translation in 1996. Errors इसमें क्या है? Although 85% of contents of the book was taken from
R.E. Durgan's translation, but his name was not mentioned as a co-translator. मतलब 80% पार्ट जो है इस बुक का वो डुडगन्स के ट्रांसलेशन से दिया गया था, लेकिन कहीं भी उनका नाम मेंशन नहीं है ऐसे को ट्रांसलेटर. डॉक्टर बोरिक कॉपीड डुडगन्स एवरी ईयर एंड mistakes in editing and editing. Example, aphorism 117 footnote, not only wrong fact was copied, even Durgan's mistake in the name of Princess Porphyro Gentia as Porphyro Gentia was copied by डॉक्टर बोरिक. डॉक्टर बोरिक ने जो दुर्गन ने इसमें जो नाम उनका प्रिंसेस था वो सेम टू सेम गलत ही उसमें कॉपी कर दिया. अब इसका कंक्लूजन क्या है? The sixth edition of Ognon was merely a copy of the fifth edition of Ognon, which Henneman has annotated in February 1842, with numerous revisions before his death in 1843 in Paris, but not very well accepted as it was the posthumous edition and also carries a lot of controversies along with it. तो इसका कंक्लूजन यही है कि सिक्स एडिशन है वो फिफ्थ एडिशन का ही कॉपी है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने इसको जब लिखा था वो 1842 में है ना, लेकिन उनकी डेथ हो गई 1843 में पेरिस में, तो वो उसको पब्लिश नहीं करा पाए, इसलिए इसको एक्सेप्टेड एज इट वाज द पोस्टथॉमस एडिशन. तो ये आपको याद रखना है कि पोस्टथॉमस एडिशन कौन सा है, तो सिक्स एडिशन ऑफ ऑर्गनन, एंड आल्सो कैरीज ए लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज अलोंग विथ इट. और इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज साथ में आ गई हैं, क्योंकि वो हैनीमैन के टाइम पब्लिश नहीं हुआ है. आफ्टर 78 years इट वाज पब्लिश्ड. तो यह यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया है कंक्लूजन तक. अब इसके बाद का जो पार्ट है वो ये है कि इन ए लेटर फ्रॉम पेरिस डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन सेज that I am preparing the sixth edition of Organon, to which I can only devote a few hours. डॉक्टर हैनीमैन ने ये लेटर में लिखा है कि मैं सिक्स एडिशन प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें सिर्फ कुछ घंटे दे पाता हूँ. Thus, this article gives a complete picture about all the editions and helps the learner to learn addition in a simple way. तो अभी जो हमने इसमें डिटेल में भी पढ़ा है, सिक्स एडिशंस ऑफ ऑर्गनन सभी के बारे में डिटेल में भी पढ़ा है, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हमने उसमें बताए हैं, वो सभी आपको नोट डाउन कर लेना है. कोई भी पॉइंट उसमें इम्पोर्टेंट है वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ ऑर्गनन से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है. अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन होम्योपैथी हैं, जो हमने पूरे इसमें से अलग किए हुए हैं, या जो सिर्फ इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आपको कल डिटेल में पढ़ाएंगे. अभी जो था स्टडी वो डिटेल स्टडी था, अब जो हम कल पढ़ाएंगे वो आपके सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं. ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट. ओके, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू.